हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप लोगों को पता है मैं ये ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू लेता हूँ। तो लास्ट फ्राइडे आई हैड ए सर्विस एंट्री कैंडिडेट जो कि PCSL एंट्री के लिए जा रहा था एंड ही हैड ऑलरेडी अटेंडेड 3 SSBs एंड हैड टेकन वंस कोचिंग ऑल्सो एंड ही वॉज पोस्टेड एट अ प्लेस कॉल्ड बारामूला जो कि कश्मीर में है। इनफैक्ट इंसिडेंटली आई वॉज ऑल्सो पोस्टेड देयर एंड सिंस आई वॉज पोस्टेड देयर तो मुझे वहाँ की उस एरिया का जानकारी है, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछा। ही वॉज फ्रॉम इन्फेंट्री एंड बारामूला इज़ द डिविजनल हेडक्वार्टर एंड ही वॉज पोस्टेड एट अ प्लेस कॉल्ड उरी। आप लोगों को पता उरी स्ट्राइक एंड ऑल हुआ था एंड आई वॉज जस्ट आस्किंग लॉट ऑफ थिंग्स कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद ओवरऑल क्या क्या फ़र्क पड़ा एंड ऑल दैट। एंड वन थिंग दैट आई आस्क्ड वाज कि tell me something about Armed Forces Special Power Act. Now remember, this person has already gone to SSB thrice, had taken coaching once, posted in a counter-insurgency area, उरी जैसे जगह में, and it's quite hot. आप लोगों को पता है ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ और इंसर्जेंसी भी चलता रहता है। And the only thing you could tell me about Armed Forces Special Power Act was that it is an act given to the armed forces to exercise control over the disturbed area. It started from northeast and later extended to Jammu and Kashmir. इससे ज़्यादा जब उससे पूछा तो he could not give me a very convincing answer. उसके provisions क्या है? What are the controversies associated with? Do you think it is a requirement for the armed forces to operate in the conditions it is? What are the human right angle to it? एंड व्हाट आर द मेजर कॉन्ट्रोवर्सीज, मनोरमा केस क्या है, इससे कनेक्टेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछा। अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट एक्सप्लेन विथ हिज 3 SSB एक्सपीरियंस एंड हिमसेल्फ बीइंग पोस्टेड इन ए एरिया वेयर आफ्पा का प्रोविजन है। ही कुड नॉट गिव अ कन्विंसिंग आंसर एंड ही इज SSB एस्पिरेंट। सो प्याज का ऊपरी छिलका, and I told you कि if you're going for the service selection board interview you need to improve your general awareness, professional knowledge, service knowledge, current affairs, national issues, and this was clearly something that was not expected from a candidate. And he being from service background and posted in an area where these provisions are existing, he could not explain. तो आज के इस वीडियो में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 के इस प्रोविज़न को थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द की प्रोविजंस अंडर दिस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एंड व्हाट आर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लॉ। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यू कैन मेक योर नोट्स एंड ये मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिनके अंडर में इंटरनल सिक्योरिटी आता है उनके वेबसाइट से ये PDF मैंने निकाला है। जिन लोगों को चाहिए यू कैन सेंड मी ए मैसेज एट 9090099035 एंड आई शेयर दिस PDF विथ यू एंड देन विद दैट PDF उसको खोल करके आप उसको साथ में इस वीडियो को देखोगे, यू कैन मेक योर नोट्स। एंड इस वीडियो में जो बातें बोल रहा हूँ उतना तो बेयर मिनिमम आपको पता ही होना चाहिए, besides the various other things connected with that, right? So Armed Forces Special Power Act. Now before I continue, I'll request you जिन लोगों ने AFOSOP YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, kindly subscribe it, press the bell icon and do share with your friends if you find value in these videos. And इसके अलावा AFOSOP के ऑनलाइन 4 weeks, 8 weeks / 12 weeks के ऑनलाइन बैचेस आर अवेलेबल, composite batch consisting of both SML and SSB. Fresh batch starts every Monday, 500% clarity. इसके अलावा those who wish to go through the full psychological test assessment along with its video based live interaction, video recording will be made available. You can contact me, I'll give you the number. And उसके अलावा personal interview also you can go through, जैसे इस candidate के बारे में बताया, you can choose that. And to register for the same you have to send me a WhatsApp message on this number 9090099035. Kindly share this with your friends
एंड उसके अलावा फ्री डेमो क्लास इज कंडक्टेड एवरी सैटरडे. Anyone can attend, you have no obligation to join the course. Anyone who is preparing by self also can join. It will give you tremendous clarity. It will be conducted over the Zoom meeting, और उसका meeting ID and passcode for every Saturday will remain the same. So इस number को note कर लो, meeting ID and passcode, you have to register it once and will remain same for all the Saturday. The timing will be from 8:30 p.m. onwards. So you can note it, right? So let's come back to the Armed Forces Special Power Act 1958. Now when you open this PDF is organized under certain sections, and the sections are like this. The first section is short title and the extent of Armed Forces Special Power Act. किस section तक इसको apply किया गया हुआ है, right? वो provision दिया हुआ है. Next section में उसका definition दिया, what is Armed Forces Special Power Act. Next, the power to declare areas as the disturbed area, who can declare that. And section 4 is important कि स्पेशल पास क्या दिया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को. इस कैंडिडेट को पैरा 4 बताना था, ही couldn't explain it. पैरा 5 अरेस्टेड पर्सन का क्या डील करने का तरीका है, by what time they have to be handed over to the police. प्रोटेक्शन टू पर्सनल एक्टिंग अंडर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. इस एक्ट में आर्म फोर्सेस पर्सनल को किस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाता है, लीगल प्रोटेक्शन. एंड लास्ट इज व्हाट आर द जुडिशियल अमेंडमेंट्स टू दिस. सो दिस इज द सीक्वेंस इन विच दिस PDF इज देयर. दोस्त ऑफ यू वांट दिस PDF, यू कैन व्हाट्सएप मी. So let's see the page 1 of the PDF, है ना. It is starts with Armed Forces Special Power Act introduction, and इसका इंट्रोडक्शन का सार ये है, आर्म फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस. This was the initial ordinance that was published, and it was enacted due to the rising violences in the northeastern part of the country. So violence became the way of life in northeastern state, and state administration became incapable to maintain the internal disturbance. So Armed Forces Assam and Manipur Special Power Ordinance. This was the initial name, but later this was, initially it was published, or this ordinance was issued as an ordinance on 22nd May 1958 for Assam and Manipur. शुरुआत में कहाँ के लिए था, आसाम एंड मणिपुर, because of the internal security conditions there. Later in 1958, under 28 of Order 28 of 1958, है ना, जो highlighted आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, this Armed Forces Assam and Manipur Special Powers Ordinance was replaced by Armed Forces Special Power Act, and this bill was passed on 11th September 1958. तो आप उसमें हाईलाइटेड पोर्शन को देख सकते हो. द आर्म फोर्सेस स्पेशल पास बिल वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड द assent of the president on 11th September 1958. It came on the book of Armed Forces Special Power Act 1958, Order 28 of 1958. So this is the way ये एक्ट को पास हुआ 11 सितंबर 1958. Now इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या, ऑब्जेक्टिव मतलब किस पर्पस से, किस लक्ष्य से इसको इस एक्ट को पास किया गया था. स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजंस इस हाईलाइटेड पैराग्राफ में है. उसका जस्ट ये है, to empower the armed forces to assist civil authorities in maintaining law and order in disturbed area. तो ये आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को दिया था किस लिए, सिविल अथॉरिटीज़ मतलब सिविल गवर्नमेंट एजेंसीज को असिस्ट करने के लिए. किस पर्पस के लिए, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर किस तरह की जगह में, डिस्टर्ब्ड एरिया. अभी इनका डेफिनेशन भी है, डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है, व्हाट डज आर्म फोर्सेस इंक्लूड, वो डेफिनेशन पार्ट में है ना. इसका एक्शन मतलब किस हद तक इसको, किस स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन, इस एक्ट को कहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकते थे, एक्सटेंड. सो एप्लीकेबल टू अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. So this was the initial extent. Later it was extended to Jammu and Kashmir also. And we'll see that, right? Now let's see the definition. इसके पैरा 2 में दिख रहा होगा definition. Armed forces का मतलब है, it includes army, air force, operating as land forces and other union armed forces. So इसमें नेवी इंक्लूड नहीं, बिकॉज नेवी का ऑपरेशंस सी में है. आर्म फोर्सेस इंक्लूड्स आर्मी, एयरफोर्स ऑपरेटिंग एज लैंड फोर्सेस and other union armed forces. So that's a definition of armed forces under the Armed Forces Special Power Act.
नाउ इसमें एक वर्ड है डिस्टर्ब्ड एरिया. सो व्हाट इज डिस्टर्ब एरिया? एनी एरिया डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड अंडर सेक्शन 3 बाय गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी टर्म्ड एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया. एंड व्हाट डज इट मीन? जहाँ पे जो पुलिस फोर्सेस है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जब उनके कंट्रोल में चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाए एंड थिंग्स बिकम कंप्लीटली हेवे हो जाता है, तब उस टाइम पे उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके आर्म फोर्सेस को अंदर लाया जा सकता है. ना क्वेश्चन इज हु कैन इस आर्म फोर्सेस को हु कैन ब्रिंग दिस एक्ट इनटू प्रैक्टिस, तो वो भी देखेंगे. हु कैन डिक्लेयर डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर सेक्शन 3, है ना? गवर्नर ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. So they can declare an area disturbed if public order is endangered. So these are the two agencies who can declare an area, a state or a part of the state as disturbed area, right? उसके बाद now declaration is published in the official gazette. So it has to be published through a gazette कि this area has been declared as. तो आप इसका डिटेल्स जो है यहाँ पे powers to declare areas to be disturbed लेटर में पढ़ सकते हो पूरे डिटेल्स के लिए, है ना? मैं उसका जिस्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ. नाउ कोर्ट रिक्वायर पीरियोडिक रिव्यू एवरी 6 मंथ्स को आर्म फोर्सेस का जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसको रिव्यू करना होता है. अगर चाहिए तो उसे अपग्रेड करके नॉर्मल कर सकते हो या उसे कंटिन्यू कर सकते हो. एंड इसमें नॉन आर्बिट्री यूज ऑफ पावर को ध्यान में रखा जाता है कि पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसलिए कोर्ट ने पीरियोडिकली डिस्टर्ब्ड एरिया को रिव्यू करके उसको रिपब्लिश करना ताकि वो प्रोविजंस को एक्सटेंड किया जाए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को. नाउ ये नेक्स्ट पेज है, सेकंड पेज. नाउ स्पेशल पावर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस क्या है अंडर दिस प्रोविजन. नाउ दिस इज एग्जैक्टली ये जो स्पेशल 4 है, पैरा 4 नीचे का, ये पूरा का पूरा जो है आपको समझना पड़ेगा. डिटेल में इसमें दिया हुआ है, मैं इसका एसेंस आपको बताऊंगा. सो पहला बोलता था आर्म फोर्सेस में यूज फोर्स including lethal force. Lethal matlab it can be fatal also after warning against unlawful assemblies or armed individuals. So जहाँ पे भी इस एक्ट को enact किया हुआ है या implement किया हुआ है, वहाँ पे armed forces को ये पावर दिया है कि they can use force including lethal force. मतलब अगर डेथ भी हो जाए तो सवाल नहीं आएगा, बट उससे पहले you have to give a warning before you ओपन फायर. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट अनलॉफुल असेंबलीज, ऐसे गैदरिंग जो कि अनलॉफुल है, और आर्म्ड इंडिविजुअल, ऐसे लोग जो वेपन कैरी कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन, टू शूट, टू किल इफ रिक्वायर्ड अगेंस्ट अनलॉफुल असेंबली एंड आर्म फोर्सेस इंडिविजुअल, राइट? नेक्स्ट इज may destroy arms dumps, fortified position or training camps. क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हो? आर्म्स का डम्प्स को. फोर्टिफाइड पोजीशन मतलब जहाँ पे आपने पूरा डिफेंसेस लेके रखा हुआ है, टेररिस्ट हो सकता है या एनी एलिमेंट हु इज डिस्टर्बिंग. और ट्रेनिंग कैंप्स, इसको आप बिना किसी सर्च वारंट के डिस्ट्रॉय कर सकते हो अंडर दिस प्रोविजन, राइट? सो दिस इज सेकेंड वाला. नेक्स्ट इज थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. मे अरेस्ट विदाउट वारंट पर्सन्स इन्वॉल्विंग इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. मतलब सीरियस क्राइम वालों को बिना वारंट के आर्म फोर्सेस अरेस्ट कर सकता है. ये पावर्स नॉर्मली पुलिस को होता है, बट व्हेन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड in disturbed areas, the same powers goes to the armed forces. So may arrest without warrant persons involved in cognizable offensive. So this is extreme powers. Next is the armed forces may enter and search premises without warrant to arrest or recover arms. तो अगर आपको किसी पे भी शक है कि उनके premises या उनके घर पे या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई आर्म्स है या कोई ऐसा बंदा है जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आर्म फोर्सेस पर्सनल कैन गो एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट. सो आपको कोई वारंट की जरूरत नहीं है. सो दिस इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पावर्स गिवन टू दी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर. तो सेक्शन 4 में ABCD आर दी पावर्स, राइट? नाउ जब मैंने उस लड़के से सर्विस एंट्री कैंडिडेट से पूछा था, तो इसका फर्स्ट पार्ट वाज दिस कि व्हाट आर द प्रोविजंस गिवन टू द आर्म फोर्सेस अंडर
आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट। ऊपर से प्याज के ऊपर से छिलके से कुछ बोल दिया, even when he was currently serving in an area that itself is provisions of Armed Forces Special Power Act exists, right? Now let's see the पीछे का पेज नंबर 3 इसका। इसमें नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स का पावर्स को भी अपहेल्ड किया हुआ है जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू, मतलब JCOs एंड NCOs आर ऑल्सो empowered to do or take action as per the Armed Forces Special Power Act. So this is a judicial observation. आप इसमें जो highlighted है उसको देख सकते हो। Next is armed forces must cooperate with civil authorities. Naturally, even though you have powers, but you have to operate with the civil authority, मतलब पुलिस and local administration के साथ लय ताल में काम करना है, right? Now section 5 जो है इसका, section 5 it tells about जो अरेस्ट करते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में, आर्मी या एफओ जो अरेस्ट करता है उनके ऊपर क्या एक्शन लेना है। सो अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद अ रिपोर्ट। मतलब किस लिए अरेस्ट किया उसका डिटेल रिपोर्ट के साथ एक तय किए वाले टाइम के अंदर उनको हैंड ओवर करना होता है। सो आर्म फोर्सेस कैन नॉट रिटेन देम बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, राइट। एंड इसी का सेकेंड पैराग्राफ है मस्ट बी डन विथ मिनिमल डिले, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इनऑर्डिनेट ये नहीं कि 6-7 दिन रख लिया, देयर इज़ अ टाइम, उस टाइम फ्रेम के अंदर द पर्सन हुएवर इज अरेस्टेड हैज़ टू बी हैंडेड ओवर द सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज पुलिस वाला जो भी है। पैरा 6 बोलता है द प्रोटेक्शन टू पर्सन्स एक्टिंग अंडर द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना, लीगल प्रोटेक्शन सेक्शन 6 में। सो नो प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट पर्सनल विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का मिसयूज़ किया है या गलत तरीके से इस्तेमाल किया है या जो भी किया है, आपका कोई उसके अगेंस्ट में कोई केस करना चाहते हो, तो आप उसको डायरेक्टली उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हो या लीगल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते हो, उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। नाउ दिस गिव्स टू मच ऑफ ए लीगल प्रोटेक्शन एंड इसका कभी कभी मिसयूज़ भी हो जाता है, उसके आपने बहुत सारे केसेस हुए हैं, आर्मी अपना इंटरनल वो करता है। इन्हीं कारण से इसको एक ड्रैकुलियन लॉ भी बोला जाता है, बहुत खतरनाक पावर्स दिया जाता है। एंड कभी कभी गलतियां भी हो जाती है आर्म फोर्सेस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पावर्स it gives to the armed forces under this provision of Armed Forces Special Power Act, right? So no prosecution or legal proceeding against personal without prior sanction of central government. Central government से आपको permission लेना पड़ेगा अगर किसी के ऊपर आपको legal proceeding करना है तो आर्म फोर्सेस का। सो दैट्स अ प्रोटेक्शन। एंड पैरा 7 इज अबाउट अमेंडमेंट्स, है ना, तो इसमें इसको आप छोड़ सकते हो। अमेंडिंग एक्ट 1960 में भी अमेंड हुआ है, एक्सटेंडेड टू त्रिपुरा इन 1970, 72 का अमेंडमेंट इंक्लूडिंग मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश 1980। दिस पैरा 7 को छोड़ दो। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू वाज दैट कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, इसके बाद फिर अगले सवाल आता है, तो जरूर कमेंट लिख के बताना कि क्या इस छोटे से वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ। हर टॉपिक को ज़रा इसी तरीके से करना। इनफैक्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आस्किंग फॉर कि सर हमें मस्ट नो स्टफ दो, तो आई शेयर यू दैट मस्ट नो का PDF एंड यू मस्ट मेक श्योर दैट ऑल द टॉपिक्स दैट आर गिवन देयर इनफैक्ट नॉट अपडेटेड, उसको आपको इसी तरह से लेयर बाय लेयर नीचे जाके तैयारी करना है ताकि यू गो बेटर प्रिपेयर्ड। नाउ एक और काम मैं दे रहा हूँ कि मैंने बता दिया कि बेसिक प्रोविजंस ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, बट उस लड़के से एक और चीज़ें पूछा था कि व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एंड व्हाट इज योर इंडिविजुअल व्यू ऑन इट। डू यू थिंक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट शुड रिमेन द वे इट इज और डू यू थिंक इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है या इसको कंप्लीटली स्क्रैप कर देना चाहिए? डू यू थिंक इट इज़ अ लॉ और ए फ्लॉ? अब आई वॉन्ट you to make a you can make a video or you can post a comment or you can make a video and share it with me on my number and if you want we can have this part of the video also as part 2 of it based on your comment. So जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना to this question और मुझे बताना कि अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए will you be able to speak with certain degree of depth. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक ए 3-minute वीडियो इन द फॉर्मेट ऑफ लेक्चरेट ऑन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एंड द कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड विद इट।
So make it as a lecturette topic and share it with me on the WhatsApp number, that is 9090099035. Right? So once again, 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks a composite batch starts every Monday. Registration is open. You can contact on the given number. इसके अलावा full psychological test is also conducted. Timing is as per you, and all your responses will be analyzed, and you will get a video feedback, live one-on-one interaction ka, and you can go for personal interview also in case you wish so. This is the number, and I already told you every Saturday we have the free demo class. Meeting ID and the passcode will remain same on all Saturdays. So when you note it, and see you on Saturday. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.